this session is about कि कुछ ऐसे features and कुछ ऐसे चीज़ें जो कि DevTools में available है, but not many people know things that you should know to make your life easy. Also keep in mind that this is not a beginner session, so I assume that you people know about what is DevTools, yeah, how to open it, so those beginner kind of things, I'm going to skip that. And apart from that, a quick thing, so everything that I show you here, I didn't have a step-by-step guide, so I'll be just giving you one picture, so that with that you can get an idea what I'm talking about. But if you want to access anything जो कि मैं यहाँ पे show कर रहा हूँ and you are not able to find that in your DevTools, so just give you a quick tip कि there is a command menu in DevTools which you can open with Command Shift P or Control Shift P, and there you can just search for that thing, जो भी चीज़ आप उसको search करना चाहते हैं. Okay, so if you use DevTools, if you're a front-end developer, DevTools is something that can help you do a lot of things. You have the powers, but you just don't know it. So with that, let's start. What I'm going to talk about is some of the things that you can do to make your life easy. So how many of you have ever experienced कि आपने कोई CSS का कोड लिखा है और जब आप वेबसाइट पे आते हैं वो काम नहीं चल रहा? फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक होल पेज, मे बी जस्ट एक सिंपल प्रॉपर्टी लिखी है और वो काम नहीं कर रही. एनीवन एवर एक्सपीरियंस दैट? आप बैक एंड फोर्थ जाते हैं, ट्राई कर रहे हैं चीज़ें, बट वो स्टिल इट्स नॉट वर्किंग एंड यू हैव नो आइडिया कि व्हाई इज दैट नॉट वर्किंग. एनीवन? ओके, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं. एक रीज़न, मेजरली एक रीज़न ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी इनवैलिड है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा टाइपो आ गया तो आपकी प्रॉपर्टी इनवैलिड हो जाती है. एंड एज अ ह्यूमन इट्स समटाइम नॉट समथिंग वी कैन क्विकली नोटिस कि एक छोटा सा टाइपो है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो दूसरी चीज़ होती है वो ये है कि समटाइम्स यू यूज प्रॉपर्टीज जिसके लिए प्री रिक्विजिट्स चाहिए होते हैं. आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर दैट, बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे वो इनएक्टिव CSS जो होता है, CSS दैट यू रोट and that is not working. So we can see एक feature है DevTools में, we can talk about that कि how you can hunt for that inactive CSS. So in this example you can see position absolute and then we have align item center. Now this is not working, this align item center is not working. There is no typo, it's a perfect property, but it's not working. The reason for that is for you to use display items, align items, you have to set display equals to flex. So that is a prerequisite. Now in case शायद आपको ये चीज़ याद ना हो और आप align items पे center, flex end, flex start, etc चीज़ें try करते जाए और वो काम नहीं करा. So what you can simply do is you can open the DevTools, आप उस property में जाएं, and if you see that little icon, so आप उस पे अगर mouse लगाएंगे तो it gives you an idea of why this property is not working. So this is one of the way of whenever आपकी कोई property काम नहीं कर गई in CSS, so rather than going back and forth between your code editor and browser, you can just open DevTools and उस property पे आप जाएं. अगर तो वहाँ पे typo है, so it will give you invalid property. अगर वहाँ पे आपको कोई prerequisite चाहिए, for example in this case, it needs display flex. So in that case आपको यहाँ से idea हो जाएगा. It doesn't give you the exact idea कि what you need. For example, in this case, it does not tell you that you need display flex. It just say try setting display to something other than block. But it gives you some idea what you need to make this work. So that is one of the feature in CSS which you can try, and this is something new. So you can try this to avoid inactive CSS, and this can also help you to be more productive. By that I mean, so rather than going back and forth, आप quickly यहाँ पे आ सकते हैं. And you can quickly check what is the problem with my CSS, why is it not working, and you can fix that. So yeah, with that little fix, you can quickly do improvements because there is always room for improvements. And talking about improvements, DevTools can help better understand your CSS and identify potential improvements. Now, that's just one of the quick things जो कि मैंने भी बात की for inactive CSS. But there are a lot of things जो कि हम face करते हैं when we are developing a product or an app application, when we are trying to code the front end. So बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कि हम face करते हैं, and maybe कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि आपको idea ना हो कि आपकी app में है, and you can improve it.
So CSS Chrome DevTools जो है it can help you to identify even those potential improvements as well जिसका आपको idea नहीं भी होता. So with that I'm going to talk about एक tab होता है. For example, when you open DevTools, you may have noticed sources, console, issues, network, etc. So जितने tabs है. Similarly, एक tab होता है which is not open by default. This tab is known as CSS Overview tab. This is currently in experimental mode. Chrome 108 में is in experimental mode. So that's just a quick disclaimer. But ये एक new tab है which can help you to identify improvements that even you may not know कि ये एक चीज़ है जो कि आप fix कर सकते हैं. And again, as I said in the start, if you want to access something, so you can just open command palette. The shortcut for that is Command Shift P or Control Shift P, and you can type for that. For example, if you want to open CSS Overview tab, so you can search for CSS Overview, and it will open that for you. So what it is basically, how many of you have used Lighthouse? Okay, very few of them. So in that case, I'm not going to use that as an example. So basically, when you open your website and you want to look for improvements using CSS Overview, what you do is आप वेबसाइट लोड होने देते हैं. जब फुल लोड हो जाए उसके बाद आप DevTools ओपन करके CSS Overview टैब ओपन करके you click on the Capture Overview button in the DevTools. इससे ये होता है कि it takes some few seconds and it takes some data from your website. And what your data have, we can talk about that. But this data gives information to DevTools what this website contains. Its colors, fonts, all those kind of things. Media queries, CSS में जितना कुछ use हुआ है, it gives all the details about that to the DevTools. And then DevTools can decide कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि जिसमें आपको improvement चाहिए. Now talking about what are the things जो कि CSS Overview tab देखता है that and आपको बताता है कि ये चीजें जो है you need to improve. So talking about that, here are the few things. Here are all of the things जो कि DevTools आपको बताता है. Number one is high level summary का आपको general idea दे देता है कि आपकी वेबसाइट में ये चीजें यूज हुई है. Fonts है, कौन से fonts यूज हुए हैं, कौन से media queries यूज हुई है, कौन से colors यूज हुए हैं. Unused declaration again, जो inactive CSS की हमने बात की थी, यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है कि कहाँ ऐसी अनयूज डेकोरेशन है, तो उसकी भी आपको एक क्विक आइडिया मिल जाता है. और यहाँ पे ये डिफरेंस है कि जितनी भी फॉर एग्जांपल 5 ऐसे क्लासेस हैं जहाँ पे इनएक्टिव CSS है, सो यू कैन क्विकली गेट एन आइडिया ऑफ यहाँ ये क्लासेस हैं जहाँ पे आपके पास इनएक्टिव CSS आया हुआ है. सो दिस इज समथिंग न्यू in DevTools, but it's something that it's one of the very amazing features जो कि आपको improvements का बता सकता है कि ये improvement जो है आप कर सकते हैं in your project. So that is about CSS DevTools. It gives you a lot of information. But what if your website looks cool, everything is good, but what if your animations are broken? क्योंकि CSS Overview tab आपको animations का नहीं बताता. So what if your animations are broken? And it is possible क्योंकि animations are it is possible because animations are sometimes tricky. For example, अगर आप simple transition etc. use करते हैं, so that is simple thing. But अगर आप keyframes use करते हैं, custom animation use करते हैं, और आप 0%, 20%, 50%, 80%, 100% इस तरह different keyframes पे आप different properties use करते हैं,
और जो टोटल टाइम था ना इन दिस केस H1 जो है उसके जो टोटल टाइम है दैट इज 3 मिनट 3 सेकंड एंड P जो टैग है दैट इज अराउंड 2 सेकंड. सो इन दिस केस आप उस पे यहाँ पे मैंने ये किया था कि 50% पे मैंने एक प्रॉपर्टी सेट की थी, इसी वजह से यू कैन सी इन H1 फ्लोट के नीचे एक दूसरा सर्कल है. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी की फ्रेम्स यू ऐड आपके पास उस हिसाब से प्रीव्यू होगा एंड हियर देन यू कैन इंस्पेक्ट, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं और वही चेंजेस आपकी वेबसाइट पे शो होती है. सो दिस वे बैक एंड फोर्थ जाके माइनर चीज़ें चेक करके उनकी चेंजेस करके वापस से वेबसाइट पे आना, उसको टेस्ट करना, फिर वापस जाना, उससे बेहतर है कि आप एनिमेशन प्रीव्यू टैब ओपन करें, यू डू द थिंग्स दैट यू वांट, और जब एक दफ़ा आपको आइडिया हो जाए कि यू वांट एनिमेशन टू लुक लाइक दिस, सो उसके बाद आप वापस से जाके वो कोड करते हैं. सो this is something that can help you to inspect and modify, slow down, repeat, and all those type of things with animations. So that is about animation. Now, आपकी वेबसाइट का क्या फ़ायदा अगर उसमें अनयूज्ड डेकोरेशन नहीं है, आपके एनिमेशंस भी ठीक है, बट वो एक्सेसिबल नहीं है टू एवरीवन. सो फ्यू ऑफ द कंपनीज फॉर एग्जांपल आपके कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे या यूजर्स होंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपके प्रोजेक्ट या आपकी वेबसाइट किस चीज़ की. फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई हॉस्पिटल है या कोई इस तरह की चीज़ है जहाँ पे कोई डिसेबल्ड लोग जो है वो आएंगे वेबसाइट पे. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट हर एक पर्सन के लिए एक्सेसिबल हो. एंड अगर आपकी एनिमेशन बहुत भी अच्छी हो तो लेकिन आपकी वेबसाइट अगर एक्सेसिबल नहीं है तो आपकी वेबसाइट से आप यू आर लूजिंग योर ऑडियंस. So let's talk about accessibility and few of the features of accessibility that in the DevTools that you can use. So one of the most important things जो कि अक्सर लोग जो है इस पे compromise कर जाते हैं, that is the color contrast. Um, it looks fancy कि आप different colors use करें, but it's of no use कि अगर आपका contrast for example background color और foreground color में वाज़ेह difference ना हो. So मैनी टाइम्स ये हो सकता है कि आपके लिए वो डिफरेंस ठीक कर रहा हो, बट कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए वो डिफरेंस विजुअल इम्पेयर्ड हो या कुछ इस तरह इशू हो उनके, तो उनको वो डिफरेंस ठीक ना लगता हो जिसकी वजह से आपका जो टेक्स्ट है वो रीडेबल ना हो. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट आपका जो कॉन्ट्रास्ट है कलर्स का इट इज समथिंग जो कि एक्सेसिबल हो बाय एवरीवन, एनीवन ऑन योर वेबसाइट जो कि विजिट करेगा दे कैन रीड द टेक्स्ट. सो in CSS there is a feature of contrast checker. ये contrast checker जो है ये basically आपके पास different websites पे भी available होता है, dedicated websites होते हैं, but rather than उन websites पे जाने के बजाय आप DevTools में inside DevTools आप वहीं पे ही check कर दे, बजाय इसके कि आप Google पे सर्च करें contrast etc and then go there and then test it and then move back. So you can test it in the DevTools. So color contrast जो है it gives you an idea कि कौन कौन से कलर्स जो है आपकी वेबसाइट पे जो यूज हुए हैं वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम जो रेशो है बिटवीन द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड उसको वेरीफाई करते हैं. सो देयर इज अ स्टैंडर्ड जो वेब इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है, स्पेसिफिक रेशो है. अगर तो वो उस रेशो से ज़्यादा है वो डिफरेंस तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो आपके पास इश्यूज आ जाएंगे. सो यू कैन टू चेक दैट डिफरेंट मेथड्स हैं. एक मेथड ये है कि जिस तरह स्टार्ट में हमने CSS ओवरव्यू की बात की, एक जो टैब है यू कैप्चर द ओवरव्यू, सो वहां पे इफ यू गो टू द कलर्स सेक्शन तो आपके पास कॉन्ट्रास्ट इश्यूज आ जाएंगे इफ आपके वेबसाइट में कॉन्ट्रास्ट इश्यूज है. अगर नहीं है सो इट विल नॉट शो यू एनी काइंड ऑफ इश्यूज. ये एक एग्जांपल है जहां पे यू कैन सी डिफरेंट टेक्स्ट है. सो 4 टाइप ऑफ टेक्स्ट इस वेबसाइट में यूज हुए थे जिसकी मैंने एक एग्जांपल ये. अब इसमें यू कैन सी एक AA है और एक ट्रिपल A है. नाउ दिस इज वेब स्टैंडर्ड. एक का रेशो जो है थोड़ा सा कम होता है, ट्रिपल A का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट दिस इज समथिंग अबाउट वेब स्टैंडर्ड. अब 2 एग्जांपल्स जो है वहाँ पे वेब स्टैंडर्ड पास हो गया है, दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल उसमें भी डबल A का. सो दिस वे यू कैन चेक कि आपकी जो कॉन्ट्रास्ट है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का क्या वो इतना है कि आप वेब इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड है वो पास हो रहा है या नहीं. सो मे बी अगेन आपके पास शायद ये ठीक लगता हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास कि उनको ये नज़र ना आता हो, उनके वो टेक्स्ट विजिबल ना हो. सो इसी वजह से यू नीड टू मेक श्योर कि
जो वेब स्टैंडर्ड है वो पास होना चाहिए टू मेक इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, क्योंकि मे बी योर फिट बट समवन इज विजुअली इम्पेयर्ड या उनकी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है एक्सेट्रा, सो उन लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी का इशू हो जाएगा. So that is something that you can check with CSS Overview tab. Another quick way to check it is अगर आप जाते हैं to your if you want to check for something specific, so another way to check this is you open the DevTools, and DevTools में अगर आपने देखा होगा top left side पे एक छोटा सा icon होता है. I have highlighted this as well. So you need to click on that, and that आप अपनी website पे आके you hover on something specific, like for example in this case में animation एक text है from the website, उस पर अगर मैं hover करूँगा, so it gives me other details about that text. For example उसका color क्या है, font style क्या है, font weight क्या है, but accessibility में contrast पे अगर आप देखें it's 2.07. So वो जो contrast है, that's the contrast of background and foreground, and this is something that fails the web industry standard. So एक दूसरा method ये भी है कि if you want to check for something specific कि उसका contrast ratio कितना है, so you can check that with this as well. But I recommend if you can go through the CSS overview tab, और वहाँ पे आपके पास जितनी भी issues है, अगर contrast issues है, तो आपके पास वहाँ पे आ जाएंगे. So maybe आपने animations भी कर लिए, improvements भी कुछ और नहीं है, contrast भी check कर लिया, but what if someone has some vision deficiency? कुछ लोग होते हैं जिनको color deficiency होती है, for example सारी चीज़ें एक ही specific color में नजर आती है. So उन लोगों के लिए how can you manage your website and make sure that it is accessible for them? So how you can do that? So let's see that DevTools has also something for that as well. That is called emulate vision deficiency. This is one of the feature in DevTools that you can check. So to use this, you have to go to the rendering tab, and again, if you want to open this, you can open command menu, Control Shift P or Command Shift P, and search for rendering. You need to scroll down, and there is a section, एक छोटा सा section होता है emulate vision deficiency. यहाँ पे you have different options, and उन options को अगर आप click करेंगे, so your website will give you the same experience as of that person जिसको वो issue होगा. So यहाँ पे when I open this are these names, so ये वो diseases है या ये वो जो लोग vision deficiency के issues होते हैं, तो उनको जो vision deficiency होती है, ये वो जो नाम होते हैं, ये वो वाले नाम है. So for example there is a blurred vision second number पे. So अगर blurred vision पे क्लिक करेंगे, so आपकी वेबसाइट अगर किसी बंदे को की विजन ठीक नहीं है, एक वो ग्लासेस पहनता हो और वो ग्लासेस के बगैर देखता हो, तो उसको वो किस तरह आपकी वेबसाइट नजर आएगी. So it gives you that effect on your website. So इस तरह आपको आइडिया हो सकता है कि एक पर्सन को XYZ इशू है, तो उस पर्सन को आपकी वेबसाइट कैसे नोटिस होगी. Now side पे you can see the icons. Now if I go for something specific, so you can see जो docs है उसका कलर चेंज होता जाता है. In the first example it changes to something green, and second example पे it changes to silver. So this way especially जब आपका जो text है अगर वो वेबसाइट बटन्स के ऊपर है या आइकन्स के ऊपर है कुछ इस तरह का, so you can check for that and make sure कि जो जिनकी vision deficiency है उनकी भी आपकी वेबसाइट किस तरह शो होगी. नाउ दिस इज समथिंग जो कि शायद हर एक यूज़र को, हर एक कंपनी को चेक नहीं करना पड़े, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ऑडियंस कौन सी है. बट कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपका कुछ स्टार्टअप है जो कि हेल्प करता है विजन डिफिशिएंसी की जो लोग हैं उनकी. सो आपकी जो ऑडियंस है मोस्टली जो है उनको वो विजन डिफिशिएंसी के इश्यूज होंगे. सो इन दैट केस यू कैन चेक फॉर दिस एंड मेक श्योर योर वेबसाइट इज एक्सेसिबल फॉर दैम. So that is one of the things that you can do to make sure your website is accessible. And with that, that is pretty much it from my side.